roundtable on education, the second roundtable, I should say. We are ready to go, if you guys are ready. Let me just begin with some housekeeping as usual. Please keep your mics muted. Let the speakers speak first. Oh. What happened? Something happened. Okay. Oh. Something big happened. Oh, okay. Can everybody see this or not? Yes, sir, we can see. Lost it. Okay, good. Well, keep your mics muted, please. Notice the cartoon that I always show, just to bear in mind that we are following overseas prescriptions. We still haven't got our true independence that we deserve because it comes only from thinking, not otherwise. So this is the second in the series, I should say. Mute your mics. We've got the second webinar where we are going to discuss the role of government in education. Yesterday, we discussed the education paradigm, or what education is. Today, we'll discuss that. We've got a lot of experts. We've contacted about 20 or 30. Let's see how many turns up. That also shows their interest in education. Unfortunately, not many of our people are interested in debating. They're interested in saying what they like. That's a problem also in Pakistan, unfortunately. As you can see, we've got a large number of speakers here, large number of people at the round table. We've got two people who are going to lead the webinar today, Shahnaz Waziri and Faisal Bari. But we've got about 20, 30 people here. We've contacted everybody in the country. I'm hoping they'll turn up and they'll contribute. Nadeem, we can't hear you. I'm sorry to interrupt you, Nadeem. We also have the minister. You heard him yesterday. Yeah. He's speaking to the mic. Welcome this debate, and he wants us what you're saying is not audible. On a Sunday, inshallah. So we'll hear about that. I want to give you this, keep this in front of you. We've had so many fund programs. Most of our history is based on fund programs, so there's hardly any policy independence at all. We seem to lurch from fund program to program, and that's basically our own inability to think. Don't think that I'm blaming the fund. It's our own inability to think. But the same is true of education. We lurch from one policy to another. We've had 12 policies that I can see, and probably more. So why are we making so many policies? Why are we in so many fund programs? I think it's the same issue that we will keep talking about. We also have a long-term growth that is declining, and we should bear in mind we've got productivity declining too. We also have our investment rate is the lowest in the world, and it's worth repeating that and keeping it in mind. Why do we not want to invest? There's a whole story behind it, which we shall not go into. But we did do a series of webinars, and we've discovered that policy inconsistency and lack of policy development and poor policy development is a big problem. Transactions costs are high. HRM state mentality prevails. State mentality prevails, and poor HRM, human resource management, prevails not only in government, but also in the private sector. Overregulation everywhere. And so these are things that we've discovered, and we can go into detail in all of these, but we will not. This cartoon is also important to bear in mind from 1950. Our forefathers also saw that we would be in an aid trap, which we still are in from 1950 to now, 70 years later, we still remain in an aid trap. And those cunning guys from the window are still saying, keep them there. Now, the returns to education in Pakistan remain lower than others. Female returns are slightly better. What does that mean? Does that mean labor market is bad, or our education designers are bad? Are we measuring and prescribing the right thing? This is what we really want you to focus on. And I think it seems that we are not yesterday's. So what did we see yesterday? We had a very good debate. I'll just summarize it very briefly. And of course, it will not be a complete summary, but it just showed that there is still a lot to discuss. We saw there's far too much centralization. Ideology and citizenship and nation building dominate. There is no realization, like in the rest of the world, that education is an investment. And the poor student pay for it, not just through fees, which some of them are paying in private schools, but also through their time, through their hard work. So they are voting with their feet. We call that dropouts, but they're not dropping out. They actually don't want the good. Education is a voluntary effort, but we want to draft people into education. This is what Article 25A is about. Teaching
does not build on student experience. It's alien to them. Street smart students don't see their street smarts being built upon, but they're asked to read. They keep coming back to that video that we showed you yesterday. They want to show them, we want to make them read Wuthering Heights, or something that doesn't relate to their experience. So yes, they vote with their feet. They vote with their feet to get out of education because their exploration, curiosity, and creativity that are instinctive for kids, as we showed you in Ken Robinson's video yesterday, they are not allowed to explore. The digital world is there. Illiterate people can access Facebook and WhatsApp, but yet we are forcing them to go to concrete schools with teachers that we are constantly training, but they don't seem to be up to the mark. So the students are again voting with their feet. There's a huge disagreement on the language issue. Some people want local languages, some people don't. Diversity, experimentation, and choice really are not allowed because policy wants to unify. So what are we measuring for education? Now today, what we want is basically to discuss the role of the government. Now why, what, and how? Is policy just wishes, or is it more than that? So I want our speakers to think about it. Basically, everybody in the government and all the education people want to prescribe for others. Their children go overseas, their children go to Eton College, their children go to grammar school, their children go to all these other things. But the question that I want to ask you is, do we want a learning society, or do we just want kids to learn? And can that happen if a government is not learning? But I also want you guys to tell me, what is an education policy? I really don't understand what an education policy is. Is it just wishes of people who sort of have access to the government? Should we have an education policy? Should we not? In the education policy, what is the role of the ministry at both the national and the provincial level? Should they be running the school system? Should they be transferring and employing teachers? Why does the policy seek uniformity, and should it? If it can't enforce anything, should it seek to enforce? So these are all issues that I think should be there. So why, who, what is important? Past policies, how did they happen? Were they well researched or handed down by donors? Can we have a culture of learning without a culture of learning in the government? Can we have students learning without a culture of learning? Is learning separate from society, or does it happen? So again, I come back to the role of the government and the ministry and monitoring and evaluation. Who is doing monitoring and evaluation? It seems that it's foreign agencies who are measuring the outputs of education. Our ministry is not. Our think tanks and universities are not. So what role should our think tanks and universities play? And for 70 years, we've struggled with the paradigm of citizenship and ideology. Who and how should it be decided? So ladies and gentlemen, with that, let me go to our speakers and just simply say that we welcome Shahnaz Wazir. Dr. Nadeem, kindly unmute She knows yourself. a lot of stuff that she can talk about. And so Shahnaz, over to you. Thank you very much, Nadeem. And I Shahnaz, wanted to unmute say yourself. Yes, I have unmuted myself. I don't know. You can't hear me? What's wrong? Is it my problem, or I can't hear Shahnaz? Hello? Sir, we can hear. Yes, sir, we can hear you. You can hear me, okay. Nadeem, can you hear me? Can you hear me now? Yes, madam, we can hear you. All right, so I'll continue. I don't think Nadeem can hear me. Maybe there's some other problem. Yesterday, I think we had a very, very interesting, complex discussion, but it centered a lot about the vast difference between the way the education system approaches the whole process of learning and our views, which I think seem to be fairly common across most of us, that the child being at the center of the learning experience was not what the system was doing. The inquiry-oriented, the experiential learning, the opportunity for individually
paced growth, the relevance of the curriculum materials, the enrichment of the classroom, the reaching out to common elements in the child's environment, as well as understanding, of course, the cognitive elements of the child's development. We talked about all of that yesterday. Bloom's taxonomy, and I still say it's really surprising that Bloom's taxonomy has not been widely translated into Urdu, Sindhi, Pashto, etc., and applied. And we still tend to make it rather an anglicized interpretation of how the brain functions and how children learn. But one of the things that came out of yesterday's discussion, and I want to tie it to today's public sector discussion, is that while we recognize, and I think even in government, to some extent, there may be recognition of how children learn and how important it is to center the entire public sector system, and of course, private sector should do it as well, to center the system on the evidence that we see about the best way and the most appropriate conditions under which learning can take place, and that the state sector does not allow that to happen. I think in our discussion today, we really need to look at what is the fundamental precept that the state follows, and by the state, I mean public sector, which actually is represented in 2-3 forms. There's the public sector, which is, as I said yesterday, वो छोटा सा स्कूल जो एक गांव किली गोट वगैरह में है, urban slum areas में है, और जिसके पास ना सही classroom की facility है, ना materials है, ना पानी है, ना sports facilities है, ना कोई ऐसी सहूलत है जिसमें बच्चे comfortably आए और समझें कि ये स्कूल जाना जो है मेरे लिए इंटरेस्टिंग इनफ है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जिसके लिए मैं स्कूल जाना चाहूँ. एक तो वो किस्म का स्कूल है. फिर आपके पास इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े शानदार गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए जिसपे करोड़ों रुपए खर्च जाते हैं, जबरदस्त गार्डन्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं. फिर आपके पास गैरिसन स्कूल्स हैं, गैरिसन स्टेट है वैसे भी और गैरिसन के स्कूल्स भी हैं. ये सारे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं. तो एक तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो निज़ाम चल रहा है इसमें जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं उनकी फाउंडेशनल फिलॉसफी, उनकी अप्रोच क्या है. अप्रोच बेसिकली ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, what we are now calling the single national curriculum, what is often understood by people as a uniform national curriculum, is being implemented. Every child should be in school for 5 hours. टाइम टेबल का पीरियड इतना होना चाहिए, 35 मिनट का होना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स उनको पढ़ानी है. और हर बच्चा खैबर से लेके कराची तक जब उसको एक यूनिफॉर्म करिकुलम मिलेगा, सिंगल नेशनल करिकुलम मिलेगा, तो वो उसकी लर्निंग अचीवमेंट उसी तरह होगी. Now this is not how life works. As children are differently abled. Some are audio learners, some are video learners, some are easier to have the easier facility to accept conceptual ideas and for abstraction. So the modes of learning are not addressed at all. The individualistic differences are not addressed. And yesterday we talked a little bit about, or a fair amount about the fact that language differences impact on how children learn. And I think the evidence has shown that mother tongue instruction, मादरी ज़बान जो है, सबसे पहले बच्चा उसको समझता है, सीखता है, उसी में अगर उसकी अर्ली स्कूलिंग हो तो वो ज़्यादा कामयाब होगा. लेकिन जो पब्लिक सेक्टर सिस्टम है वो इस किस्म की चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करता. तो आखिरकार क्यों नहीं करता? अब सवाल हमारे सामने जो खड़ा होता है आज पब्लिक सेक्टर सिस्टम में वो ये है कि क्या पब्लिक सेक्टर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेस फॉर इनोवेशन, diversity, different modes and different ways of approaching schooling in a community, क्या ये मुमकिन है स्टेट में कि नहीं? अभी तक तो हमने देखा है 70 साल की जिंदगी में कि स्टेट कैन नॉट live with diversity. It does not know how to cope with multiple models. It knows how to cope with one model. So one model is prescribed, and the anticipation is that if you prescribe this one model, you will get a common set denominator and every child will learn at a certain level and achieve a certain
level of learning objectives in different subjects. We all know that that is not true. So to what, I think the principal question for Pakistan is, in what way can this public sector reorganize itself, regenerate itself, redefine itself, ताकि जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे फर्क किस्म की सॉल्यूशन सामने आए और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल एनवायरनमेंट है, उसमें जो स्कूल्स हैं उन बच्चों की नीड्स एड्रेस करें. क्या ये मुमकिन है? मैं समझती हूँ कुछ हद तक मुमकिन है, लेकिन जो इस वक्त जिस तरह हम चला रहे हैं और काफी सालों से चलाते रहे हैं कि फेडरेशन ने सेंट्रलाइज किया हुआ था सब कुछ. Centralization is the death of any learning, and this is the death of any innovation, reform, flexibility, resilience, adaptability, anything. So when you centralize and you prescribe, and then you prescribe what seems to be very heavily an indoctrinated curriculum that is going to go heavily into indoctrination, both religious and ideological indoctrination, then we are not going to be able to provide any sort of hope for our children to learn. So एक तो ये principal question मेरे ख्याल में आज हमें address करना चाहिए कि क्या state अपने आप को reform कर सकती है, public sector schools को reform करने के लिए क्या वो conditions हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो हमने वो conditions कैसे create करनी है? दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि नजर आ रहा है कि जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को नहीं डालता. अपने पेट पे पत्थर बांध के भी जो गरीब पेरेंट्स भी हैं वो भी समझते हैं कि कोई प्राइवेट स्कूल है जिसके ऊपर लिखा है इंग्लिश मीडियम रेडियंट वे स्कूल या कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वो 500 रुपए अपनी जो कम कमाई भी उसकी है उसमें डाल देता है और बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है. तो पब्लिक सेक्टर टुडे हैज टू बी काउंटरफेस्ड अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर. Is private sector providing something that the public sector is not providing, which is why we are seeing a big shift of enrollment? So what is private sector doing that public sector is not able to do? Part of the answer lies in management. The other part really lies in this whole issue of, can education leaders, political leaders, bureaucratic leaders, who I don't think have the ability to reform, and they have status quo. So can the status quo machinery really redefine itself? I'm not even going so far into the IT-enabled technology, which we think हर एक बच्चे को iPad दे दें या tab दे दें तो जबरदस्त result आएगा. आपके पास वो agency नहीं है local communities में. By agents, I mean the teachers who can actually deal with IT-enabled technology. And so therefore, multiple questions. Fundamental issue is, to what level of decentralization can we push in the reform agenda? At the provincial level, district level, or sub-district level? And it is entirely possible that some state schools, whether they're in Punjab or Sindh or Khyber Pakhtunkhwa, anywhere, will do better than others when you go for a completely decentralized arrangement. We are nowhere near that. On the contrary, we are going into Yaksa Talimi Nisab, which means uniformity of curriculum. I have said that please do not call it uniform single curriculum or single national curriculum. If you want to have a national set of standards, just call them core minimum educational standards, and then let everybody build their school systems around that. I think I will stop there because there are many people who wish to speak, and it's a pretty complex subject here today. But clearly, I think one wants to underline that there is state failure, governmental failure, and we are in a crisis. We've been in a crisis for a long time. So far, crisis has not produced effective reform. So does the absence of a crisis produce reform, or does a crisis produce reform and change? And how does one bring that about? Thank you. Thank you, Shahnaz. Thank you very much. I think that's very well put. I agree with you entirely. But let me turn to Faisal Bari. Faisal Bari, now Dean of
the Lum School of Education. Faisal is a well-known guy, writes regularly for newspapers, is a well-known intellectual, head of Ideas, a think tank in Lahore, and professor at LUMS. Faisal, can you please tell us, should we tell the government to stop making policy and stop trying to influence education if what Shanaz says is true? And 12 policies or 13 policies later, should we just simply stop making education policy? नदीम, जो बहुत ज़्यादा मुझे आपकी बात पसंद है ना, वो ये है कि आप हमेशा सवाल बड़े अच्छे उठाते हैं और उससे डिबेट बड़ी अच्छी जनरेट होती है. पहली बात तो खैर हुकूमत को हम कुछ भी कहेंगे उन्होंने कौन सा मान लेनी है, ये एक अच्छी बात हमारी हुकूमत की भी है, बट इससे कतई नज़र. लेट मी जस्ट बिगिन बाय सेइंग, मेरे ख्याल में आई थिंक सो कल मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँ. पहले तो आई जस्ट वांट टू से कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम लोग सारे ये चाहते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट पीपल वुड एग्री कि देयर इज अ लॉट दैट वी वांट टू डू फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, इन द सेंस के चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी के, हम जब समझते हैं कि वो बच्चे इस मुल्क के हैं और हमारे ही हैं, तो उनको हम कुछ चीज़ें ज़रूर देना चाहते हैं उन तक पास. उन्हें हम तैयार करना चाहते हैं उस ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने फेस करनी है. उसमें स्किल्स भी हैं, उसमें न्यूमरेसी लिटरेसी भी है, उसमें और चीज़ें भी हैं जो उनकी अब बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है. अगर वो ज़्यादा आगे तक जाना चाहते हैं तो वो उस ज़ाहिर है स्किल लेवल, एजुकेशन लेवल, उस लिहाज से फिर आगे जाना पड़ेगा. उसमें वो असास भी है जो हम समझते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें अपने आबा व अजदाद से मिली, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. फ़लसफ़ा है या रिलीजन है या कल्चर है या ट्रेडिशन है या लैंग्वेज है या इवन रेसिपीज़ हैं. हम वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें अपने बच्चों तक ज़रूर ट्रांसफ़र करें और सब तक करें, और ताकि उसके साथ साथ ताकि उनका जो पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल वो लेके आ रहे हैं या जो बन सकता है, वो अपने पोटेंशियल तक जा सकें. आई थिंक दैट्स द बेसिस on which a lot of these 25As and others have been built. कि भाई when we say कि every child has a right to something, वो right इसी तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि भाई सोसाइटी कहती है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, तो फिर उसको हम राइट्स के फॉर्म में किसी तरह इंश्राइन कर लेते हैं. ना वो किसी ऐसा कोई नेचुरल जस्टिस से आ रहे हैं, ना वो कहीं और से आ रहे हैं. हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. अभी 10 साल हुए हैं हमें 25A को क्रिएट किए हुए, और इंडिया में भी शायद 12-15 साल ही हुए हैं. उससे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स वर नॉट लुक्ड एट इन द सेम वे एज से ह्यूमन राइट्स वर, एंड बिफोर 40s human rights were also not in the same, looked in the same way as we now look at human. So there's a evolution in thought, there's a change in thought in society में वो आता रहता है. So मेरे ख्याल में वहाँ तो अग्रीमेंट है. अब उस पर डिसएग्रीमेंट ये हो सकती यहाँ पे है कि जी वो कैसे करना है, उसमें क्या शामिल होगा क्या नहीं शामिल होगा. यहाँ आजकल बहुत डिबेट हो रही है, जैसे एसएनसी की शहनाज ने बात की कि भाई वो किस तरह से हम करेंगे वो. एक और चीज़ यहाँ पे बड़ा प्रिंसिपल मेरे ख्याल में जो ज़्यादातर लोग अग्री कर लेंगे, मुझे पता है आप ज़रूर उसे क्वेश्चन करेंगे एंड वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट, कि ये जो स्टेट वाला मामला है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि हम अनपैक करें. आप बिल्कुल ठीक हैं इस बात पे कि आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, चाहे वो डोनर से आ रही हैं या हमारी कॉलोनियल लेगेसी है या जो भी चीज़ है, वो चीज़ें चलती जा रही हैं. हम उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, हम उन्हें दोबारा से सोचने की जहमत नहीं करते. स्टेट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल से जाए बगैर मेरे ख्याल में क्या एक इकट्ठी होकर आवाज़ बन जाती है ना, वो आवाज़ किसी भी फॉर्म में हो, उसके आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लें गवर्नेंस का, वो डेमोक्रेसी की फॉर्म में हो या ना, वो पार्लियामेंट की फॉर्म में हो या प्रेसिडेंशियल, वो तो अलग बातें हैं ना, लेकिन एक आवाज़ है जो किसी तरह आपने कंबाइन करनी है. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेटिंग जनरल विल, whatever you want to call it, in some way or the other. Now the problem, so I don't see the state as an alien, as a very different kind of organizational arrangement than a lot of the other common purpose institutions and organizations that we create. Yes, it is massive. It has monopoly over violence. It has tremendous power. It has a historical route, of course, which is very important. And therefore it has acquired certain tones, etc., etc. But my feeling is, as a society, we need to go back and rethink what is the state if it is not the voice of the people. And so if people want education, then clearly the state will have a role in education.
اگر وہ چاہتے ہیں کہ سارے بچے پڑھیں تو جو ہمارا کامن پرپز انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر انہیں اس میں آنا پڑے گا. یہ تعلیم میں بھی ہوگا, یہ صحت میں بھی ہوگا, یہ پانی میں بھی ہوگا, یہ سیکیورٹی میں بھی ہوگا, یہ بہت ساری چیزوں میں ہوگا جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کو ملیں یہ چیزیں. تو اس میں رول آف دا اسٹیٹ تو آئے گا. اب وہ اسٹیٹ کو کیسے آرگنائز کرنا ہے وہاں بڑے کلیئر لیسنز ہیں کہ بھائی ظاہر ہے یہ یونٹری طور پہ نہیں چل سکتا, اس کو ڈی سینٹرلائز ہمیں کرنا پڑے گا, جتنا نیچے لے جا سکیں لے جانا پڑے گا. بہت سارے سوال اس میں آف کورس ڈائیورسٹی آئے گی, ویریشن آئے گی. ہو سکتا ہے آپ ڈسٹرکٹس بھی فرق طریقے سے ترقی کریں, کہیں زیادہ ترقی ہو جائے, کہیں کم ہو. پروونس اور فیڈریشن کو تھوڑا ایکولائز کرنا پڑے گا, لیکن وہ جو انڈیویجول انیشیٹوز ہیں ان ڈسٹرکٹس کے, سب ڈسٹرکٹس کے, وہ بھی چلنے پڑیں گے. میرا تو خیال ہے کہ اسکول کے لیول تک جانا پڑے گا. جس کو ہم پبلک اسکول کہتے ہیں, ابھی وہ یلو رنگ کی بلڈنگ یا جو بھی رنگ, آپ پنک رنگ کی جو بلڈنگ بنا دیتے ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طرح ایلین ہے, وہ اس گاؤں یا اس شہر سے جس میں وہ واقع موجود ہے. اس کو اس لوکل سوسائٹی کا ہمیں حصہ کسی طرح بنانا پڑے گا تاکہ وہ اسکول جو ہے اور جو اسکولنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم ری ڈسکور کر سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے. یہاں میں آپ کی ایک اور سوال سے کنیکٹ کر رہا ہوں اس کو مزید. لیکن میرے خیال میں بات یہ کہ یہ جو ماڈل ہے نا کہ ہم 6-8 گھنٹے کے لیے بچے کو اسکول میں لے آئیں اور اس کو یہ والے سبجیکٹس پڑھا دیں, مجھے یہ لگتا ہے آفٹر 10 سال of 25A, given our very young population and the numbers that we have and the numbers that we keep producing, اور جو ہم باقی چیزیں ساری کرنا چاہتے ہیں, کبھی بھی شاید, and I'm sorry if this may sound very negative, ہم شاید کبھی بھی سارے بچوں کو اسکولوں میں لا کے پڑھا نہ سکیں جو ہم نے 25A میں 10 سال کی ایجوکیشن کا اور کوالٹی ایجوکیشن کا وعدہ کیا ہے. ہم سے ابھی بھی 20 ملین بچہ بھی باہر ہے, اور جو اسکولوں میں ہیں بوتھ پرائیویٹ لو فی اینڈ پبلک, ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے پا رہے. جو ریسورسز ہمیں انڈر دس ماڈل چاہیے یہ کرنے کے لیے, چاہے ہم وہ کہہ لیں کہ جی ملٹری کاٹ دیں, فلانا کاٹ دیں, فلانا کاٹ دیں, مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک تو وہ شاید ممکن نہ ہو, پر ممکن ہو بھی تو شاید ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز نہ بن سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی give up on the dream of educating every child and trying to give them more opportunities for whatever they want to be and can be. Now, how do you go back to that is the question. What kind of models can we create that allow for education of children, that allow for their gaining the skills and the values and everything else that we think is important, but at the same time different from the current model, because انہیں اسکولوں میں بند کر کے اگر آپ کانکریٹ کی بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں وہ بنا کے اس سے تو نہیں ہونا. ہم سے یہ تعلیم ریٹرنز ٹو ایجوکیشن سے میرے خیال میں اس کا تعلق توڑنا ہمیں تھوڑا پڑے گا. ندیم وہاں پہ میں آئی اگری کہ ریٹرنز ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ریٹرنز بے شک کم ہیں, پر ریٹرنز ٹو ایجوکیشن کم ہے تو اس کو, لیکن پہلے 8-10 سال کی تعلیم آپ ریٹرنز ٹو ایجوکیشن کی ٹرمز میں نہ دیکھیے, صرف آپ اس کو ایز اے بیسک رائٹ, ایز اے بیسک کنڈیشن آف لیونگ دیکھیے. جو انڈین سپریم کورٹ ہے ایونچولی اس نے یہ اس طرف چلی گئی تھی نا کہ دس از پارٹ آف دیئر تھنکنگ آف واٹ اٹ مینس ٹو بی پارٹ آف دا بیسک رائٹ ٹو لائف, وہ انہوں نے اس میں آلموسٹ شامل کر دیا. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بیسک رائٹس میں کے حصے میں شامل کیجئے. ہم نے بھی یہاں 25A جو ہے وہ بیسک رائٹس والے حصے میں شامل کیا. سو اس کو اگر ریٹرنز کی ٹرم میں صرف سوچیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم وہ اس کی وہاں سے جسٹیفیکیشن نہ ملے. تو میرے خیال میں تو جسٹیفیکیشن وہاں سے نہیں آ رہی نا. میرے خیال میں جسٹیفیکیشن آ رہی ہے کہ سوسائٹی یہ سوچ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ ہر بچے کو کم از کم اتنا تو اکوپ کر دیں کہ وہ اپنی زندگی ہم سے بہتر, پہلے سے بہتر, اور جو بھی ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کے قریب آنے تک پہنچ سکے. وہ یہ آئیڈیل ہے, ظاہر ہے وہ کتنا آئیڈیل ہم جا سکتے ہیں دور وہ پتہ نہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گا, اور اس کے لیے میرے خیال میں اسٹیٹ از جسٹ ون راؤٹ اینڈ ون ٹول. To make it work better, we have to do a lot of work, but that doesn't mean کہ if it's not working we cut out that tool کہ جی یہ
टूल इसलिए अब यूज ही नहीं हो सकता, वो हमें उसको बेहतर भी करना पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा. किस तरह कर पाते हैं वो हो सकता है, वो उसके लिए हमें बहुत सारे नए मॉडल्स क्रिएट करने पड़े. Let me stop there and then we can come back in the debate. Thank you, Faisal. Thank you very much. I think that was, I mean, you made a very strong point. It's a basic right, and we have to socialize our kids and we have to work with them. And certainly society should take the cost of that. But the issue really remains, while I agree with you entirely on all that, the question is really, if the state has 70 years of incapability of doing that, and we've gone round and round the mulberry bush, we really need a paradigm change. Let me bring in Dr. Neelam Azaz Hussain. Dr. Hussain is a rector of the grammar school. She was here yesterday with us too. Dr. Hussain, you run a private school system. In fact, it's a very large system, very well-known system. Can you please tell us, what do you expect from a government policy? Let's forget about the policy today or whatever. Can you tell us what you expect from government policy? What should be the cornerstone of a good government policy? I really was listening very intently to the first two speakers. But मेरा जो take है ना इस issue पे वो ज़रा मुख्तलिफ है. I would look at where Pakistan historically over 70 years went wrong. And if you ask me, इस वक्त में मेरे लिए दो तीन चीजें बहुत तकलीफ दे हैं. और मैं इस पूरे जो प्रॉब्लम और पैराडाइम को सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन की तरफ से नहीं देखती. मैंने हमेशा लिटरेसी और एजुकेशनल रिसर्च पे काम किया है अक्रॉस द ग्लोब. सो मेरे लिए जो सबसे तकलीफ दे चीज है वो ये है कि पाकिस्तान has one of the highest illiteracy. हम अब बातें कर रहे हैं of the literate. Let me tell you what ails us. What is the cancer in learning here? Pakistan has one of the highest illiteracy rates in the world and the second largest out of school population. 5.1 million children, and it is second only to Nigeria. Now, before we expound the Finland example and we talk about how can you exclude 5.1 million people from education and on a global situation be the second worst provider of education? उसके बाद मुझे चीज जो बहुत दुख देती है, जब मिलेनियम गोल सेट हुए for universal primary education, देखिए base of the pyramid से आप problem को solve करते हैं. We started decorating the top. उसमें मुझे जो सबसे चीज एज अ पाकिस्तानी हर्ट की वो ये था कि only sub-Saharan countries and Pakistan did not meet them. और अब मेरे लिए कोई भी educational ministry, educational resource person, consultant should not be able to live with this. If the base of your work for Pakistani citizens is so poor and so warped, how can you ever do better at the top of the pyramid? दूसरी चीज जो मुझे बहुत दुख देती है वो ये है कि जो हमने, despite losing the universal primary goals and being amongst the worst countries in the world in our efficiency score, जो हमने पैसे और तवज्जो दी इसको, उससे further क्या हुआ? It took away the emphasis on universal primary education, had taken attention away from the aspects of international development, of educational development, including the quality of education. जब हम वो काम कर रहे थे, हमने quality of education हम भूल गए. Adult literacy को we threw out of the window while this task was overwhelming us. And early childhood care was totally ignored. अब हम जब ये करते हैं, we don't look at all the eggs in our basket. We tend to just, dust the top most issues. Trained teachers are in very low supply. इसमें teaching या education department की गलती नहीं है. The educational and cultural capital in Pakistan is abysmal. The teachers have been through an abysmal educational
not training, but abysmal education, which was based, again, I will say, on idealism, recall, and rote learning. जब एक इंसान ऐसी तालीमी बेस से आए, तो वो कैसे सडनली फिनलैंड के टीचर्स तक पहुंच जाए? और जो सबसे ज्यादा चीज मुझे तकलीफ लगी है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारा जीडीपी का, it was 2.80. It was the highest expenditure we've ever done in 1987 to 88. उसके बाद हमारा जो public expenditure है, for 21 years it has stayed stagnant. If the linear trend that existed in 1987 and 88 had been maintained, Pakistan would have touched 4% of GDP well before 2015. हम सिर्फ methodologies और उस, हाँ, those are so important. But आपका infrastructure is your scaffolding, and your scaffolding is non-existent. So every time you do a program, it comes crashing down. And what experts are saying, that given this disappointing trajectory, increasing public expenditure on education to 7% of the GDP would be welcomed. हमें सबसे पहले अपनी हुकूमत को कहना चाहिए कि प्लीज जीडीपी बढ़ाइए, और ये भी समझिए कि जो आपने गलत करिकुलम डिजाइन बनाया था, उससे लोग जो आ रहे हैं into the as educators, they're products of that. They're not at fault. No amount of training will change what they have learned. And इसके अलावा मैं समझती हूँ कि फिर आप आइए into a language of instruction and issues of and another issue that I find is very disturbing is that imposition of Urdu to non-Urdu speaking population as a first language. जब आप कहते हैं कि first language आपकी अपनी जुबान आपके इलाके की होनी चाहिए, मैं 100% उसे एग्री करती हूँ. मेरा पॉइंट ये है, उसको पढ़ाने के बाद हमें बच्चों को अंग्रेजी जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि आप इतने हैरान होंगे that when I looked at statistics for English speaking people, Pakistan is third in the world. First is US, then is India, and 41% of the people can speak English. अच्छा, ठीक है, आप क्या जहां where your cup is more than half full, those areas need attention. अंग्रेजी को आप यूज करें, because हमारी इकोनॉमी इतना डिपेंड करती है from, we're constantly talking about remittances, क्योंकि हमारे nationals के पास तालीम नहीं होती, तो वो ब्लू कॉलर काम करते हैं और थोड़ा कमाते हैं और थोड़ा पीछे भेजते हैं. अगर हम इन्हीं लोगों को तालीम दे के भेजें, तो ये तो फिर बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हो ना, यू ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बेसिकली मैं समझती हूँ इनके बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे. आप करिकुलम बना लें, आप ये कर लें, वो कर लें. दैट्स माय take. Great, but I still don't see a role of the government in any of this, despite what all of you say. Well, okay, Shahid Kardar, will you? May I say Shahid something? Just take the who decides the GDP? Okay. Allocations. Okay. Who decides the GDP allocations? Who decides and looks at why expenditure? नहीं, पर ये गवर्नमेंट का रोल है. इट्स अ पेरेंट बॉडी. और ये ट्रैजेक्टरी क्यों नहीं नोट हुई कि ये इतनी डिसअपॉइंटिंगली नीचे जा रही है, और जिस चीज को आप पैसे नहीं देंगे तो ठीक कैसे होगी? तो मैं समझती हूँ कि we find one solution for all problems. Thank you. Good point. Okay. Let's take it to Shahid Kardar. Shahid, what do you have to say? बात ये है कि मैं बड़ा फंस गया हूँ. मसला ये है कि हमें 70 साल से अभी तक नहीं समझ आई कि ये रियासत कुछ नहीं कर सकती. और क्या करवाना है दूसरों को? मैं बड़ा सिंपल सी, बस स्टार्ट विद योर premise. The consumer is saying I don't want this service. आप कहते नहीं मैंने देनी है. फिर आप कहते हैं असल में, अभी गिव यू एन एग्जांपल, शराज बैठी है, वर्ल्ड बैंक आया, उसने कहा जी बात असल में ये है
कि यहाँ we didn't have enough boundary walls, हमने boundary wall बना दी, बच्चे फिर भी नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, असल में बात ये थी कि यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, आपने टॉयलेट बना दिए, बच्चे फिर भी नहीं आए, उसके घर पे भी टॉयलेट नहीं था। आई की फेयरिंग हाइजीन कैसे सिखाई जाएगी। फिर ये कहा गया कि नहीं, असल में we were still not getting the message. He doesn't want your service. Yeah. Because this quality of the service is poor and will continue to be. And that unfortunate reality. आप कहते हैं जी फंड्स नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि what have been the outcomes in terms of the efficiency of the expenditure. मैं आपको कहता हूँ मेरा, और वो हम कल बात कर लेंगे when you talk about public-private partnerships. हमने through PEF at 1/9 the cost, the outcomes were better than the government. तो आपने और पैसे डालने सिस्टम। पर ये बुनियादी बातें अगर हम नहीं करेंगे नहीं, let's now come to the role of the government. बात ये है, should it be in the business of delivering education, or as Faisal Bari reminds us, कि एक बच्चे का basic right है should be able to get up secondary education तक free education. Doesn't mean the government should be in the business of delivering that service. Financing should be separate, and we've seen enough, and I can give you several examples of my own experience of what one has done. Okay? The second point I want to make is, which is, I mean, I just want to focus on the questions that you've raised. आपने दूसरी बात की कि जी ये किस level of government should be in the business of doing this. I'll give you the simplest example to illustrate the nature of the problem. इन सबको पता है, शराज in particular. बात ये है कि आपने प्राइमरी स्कूल टीचर रखे थे as तहसील cadre, i.e. the whole idea was that there would be a localized service. क्या हुआ? नहीं, सियासतदानों को भी यही चाहिए, secretary education भी लानत ऐसी secretaryship है कि if you can't control the transfer of teachers, तो वो जो तहसील cadre था, वो was supposed to be confined to a particular तहसील, वो नहीं हो पाया। मेरे कहने का मतलब ये, if you want, and what should be the case, that at least up to the secondary level it should be localized. And essentially अब वो model देखा जा सकता है कि localized कैसे। Why no, I keep hearing ये parents चलाएंगे, notables चलाएंगे, हमारे जिस किस्म के notables हैं उनकी moral values हम सबको पता है, especially when it comes to females and so on and so forth. So that's a difficult one, but I don't want to go into that at the moment, and we can discuss it separately. आपने कहा जी स्कूलिंग स्पेस, क्योंकि आपके सबके ज़हन में है कि स्कूलिंग स्पेस का मतलब है एकड़ होने चाहिए, कोठी की तरह स्कूल होना चाहिए। मुझे जरा बताएं, आप ऐसे LSE से पढ़ के आए हैं, वहाँ आपने कोठी देखी थी LSE की? आपने क्या देखा था? So you can go up. That has never been the issue. स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने ये किया, उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया क्योंकि सबके इंटरेस्ट में है कि ठेकेदार से पैसे बनाने, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे नहीं है। एवरीथिंग मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस, नॉट बेस्ड ऑन हेयरसे, ठीक। So this whole question of schooling space is not a constraint if you change the building and zoning regulations. The fourth area, आपने कहा जी रेगुलेशन, यार मुझे नहीं समझ आई, जहां यही क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज को रेगुलेट करना और क्यों करना है। दैट इज द रियल इशू। अब वी ऑल नो यहाँ रेगुलेट करना फीस चार्ज, आपको और मुझे पता है, शनाज को पता है, नीलम को पता है। Essentially, the market is catering for all segments, economic segments of the population. So उस तरह नहीं है कि somehow, because हमारे ज़हन में वही है कि मैं बच्चा अपना LGS में भेज रहा है या GSEN में भेज रहा है, इसलिए फंसे हुए। But the reality is that today the market provides education for all economic segments of the population. ठीक है? अच्छा, रियासत कह रही है नहीं, रियासत नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट भी और पॉलिटिशियन भी कह रहा है कि मैंने इसकी फीस रेगुलर, अपना स्कूल नहीं ठीक करना, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, frankly they're not even interested in changing. ठीक? So this whole question of regulation, और वो I just want to link it up with one thing, this point that you made about the culture. Reality ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है that the private sector should have a vision and think long term, but the government is entitled to always firefight and think in the short term. I mean,
the private sector takes a signal from the government. Government कह रही है कि मुझे तो ये नहीं पता कि सुबह कहाँ कैसे गुजरेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कह रही है you must take a long term. So reality जितनी देर तक इस तरह नहीं देखेंगे ना, वहां पे वो कह रहा है कि जी मुझे ये मसला आ गया तो मैं कल सुबह इसको रेगुलेट कर दूंगा. So the rules of the game will change every time, not necessarily because of ill intentions, because as you keep reminding us, the policy framework itself is not, because there's no such thing as policy. The rules of the game will change simply because the government cannot think beyond tomorrow. The reality is we can't think beyond short term. आप अपना experience देख लेना, economic side. Finally, I heard Shanaz, and I talked about it yesterday. Shanaz, I heard saying कि देखो जी technology people वो हमारे पास बंदे नहीं है at the local level to be able to use technology. मैं आपसे बड़ा simple सा सवाल पूछ रहा हूँ. It is a paucity of our vision and our imagination. Technology today is becoming so user friendly and at such a rapid pace. ये हम उसी में फंसे हुए हैं कि जी नहीं है. आप देखें तो सही 5 साल का बच्चा किस तरह इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी को, और आपका अनपढ़ नौकर जिस तरह ये इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करता है, सेल फोन, आप सोच सकते थे. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि this technology today, the pace at which it is becoming user friendly, please think of those. If you want a level playing field for these children, take away, आपके पास सारी उम्र पब्लिक सेक्टर में साइंस का टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, मैथ्स का नहीं मिलेगा, उनको वो तो कोरे अनपढ़ है, उनको आप किसी किस्म की, माफी चाहता हूँ, वो अनएम्प्लॉयबल है. आपने उनको नौकरियां दे दी हैं, वो सारी उम्र के लिए वजीफा लग चुका है. And the pace of attrition. Let me bring in a few of these other people. Let me see. I'll just end. I'm just okay, ending. sure. The Sure, pace sure. of attrition to be able to replace them with good quality teachers, just to remind ourselves, is a 1.7% per annum. ये नहीं होना. So the way technology will bring us that kind of access. और आज, just to conclude, आज मैं आपको फिजिक्स अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, it's just a matter of time कि वो translation उसकी उर्दू में मेरे कान में आ रही होगी. So you know, let's think along those lines. रियासत कुछ नहीं कर सकती. ये पैसे खर्च करते रहेंगे वो टेक्स्ट बुक छापने में, मैं और आप रोते रहेंगे कि ये क्या करिकुलम है, वो एक अलग बहस है. You can get around all this. Spend less money on this nonsense of teachers and textbooks which you're providing free and distributing them free. Instead, same money and you'll get a far higher return by actually investing in technology. Thank you. I'll just end. Technology का हम परसों बात करेंगे. We've got a good panel on technology. But let me just ask. दोबारा इसलिए मैंने की, वरना ना करते. ठीक है. Let me ask Nazish Ataullah, who's been also in the education sector for a long time. Can you just tell me, Nazish, what does the education ministry do and how does it make policy? आप बताइए, नहीं तो I'll ask some other people. Would you like to talk about it? Well, I only have a reasonable idea of what the education ministry does, but I think that perhaps I'm not the best person to talk about this actually. Okay. I think that what the education ministry does is that it employs a whole lot of consultants from all over the country. It has people who are within the ministry itself. And what it essentially does is that it picks up that so-called curriculum and small changes are made to it. But I don't think that any very serious kind of thinking, the kind of discussions that we're having right now, these kinds of discussions are not part of what the ministry's mandate is. I don't think they do that. It's very prescriptive. And I don't think that they consider the kind of things that we have talked about yesterday, the kind of things that Ken Robinson was bringing up,
the whole emphasis on creativity, on creative learning, on visual learning. We are still stuck very much with the 3 R's, arithmetic and rote learning and etc., etc. We're not thinking about all the other things that are relevant to our lives and to our diverse cultures. I think that is the problem. Shahnaz, would you like to take this issue up? What does the Education Ministry do and how does policy get made? We've had 12, 15 policies in the last so many years. How were these policies made? And what does the Education Ministry do any M&E? I'll come to you, Faisal, as well. Does the Education Ministry do anything that we can say that it's capable of making a policy? I'm curious. I don't have any priors on this. I'm just curious. I think now we have the Federal Education Ministry for training and regulation or something, although there should not really be any Federal Education Ministry of the type that there is right now after the 18th Amendment. And then, of course, we have education departments. So let me just quickly say that if one had an opportunity, all of us, let's say, had the opportunity to redraw the structures of education in terms of government, what would we say? I, for one, would say disband the ministry. I've felt that for a long time. From the very first day I walked into that ministry, I felt that this is not what a federal ministry should do. Education primarily should sit with the districts. There should be district education boards, etc. And at the federal level, I would actually have an education commission. That education commission would be constituted of people that are from society, people with experience, experts, and I'm not necessarily talking about PhDs, but people who have been steeped in the education delivery, in the education experience, who know education from the ground up, from the bottom up. Have an education commission that really clarifies and defines how Pakistan is going to arrange its educational delivery systems. New ideas, reform, change, adaptation, etc., which I've talked about earlier, which means that commission could probably even suggest things like do not have regularly employed school teachers. Why can't we have contract-based, performance-based teachers from the local area as opposed to permanent service employees? That commission could look at many other things. And I'm quite convinced that if there was such a powerful commission with a great deal of independence, you do not actually need a ministry. You could have a commission and a secretariat. The provincial governments, of course, have to provide funding. And there is that function of the provincial governments that should do some overall supportive arrangements for every child to be educated, not to deliver that education itself. And I agree with many of my colleagues here that, frankly, all these policy documents that sit on the shelves, what we are seeing today on the ground has absolutely no relevance to what the policy document says. I have not even read a policy document for a very, very long time. And I see strange changes taking place when governments make decisions where you're really left pretty foxed because समझ नहीं आता कि किस बुनियाद पे ये फैसला किया जा रहा है. तो मेरे ख्याल में अगर पॉलिसी बनेगी तो एक मैक्रो लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए कि हाउ डू यू इंश्योर कि ये हर बच्चे का जो हक है तालीम हासिल करने के लिए ये उस बच्चे तक पहुंच रहा है. और बाकी जो बेसिक फैसले हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देने चाहिए. मैचिंग ग्रांट्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए. तो मेरी बहुत मुख्तसर तौर पर व्यू ये है कि इतनी बड़ी एजुकेशन मिनिस्ट्री की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज को भी रीडिज़ाइन रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और फोकस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमीशंस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ पर. वो अपनी पॉलिसी बनाए अपने ज़िले के लिए और फैसला करें हमने अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाना है. You, Faisal Saab, you are the Dean of LUMS Education, and you, mashallah, one of leading experts on education. I value all the stuff that you write, very interesting stuff, and I think you also have a very soft spot for education. So can you please tell us, Faisal, I mean, I still am trying to grapple with two things. One is, what is the ministry, provincial, forget the federal, what is even the provincial ministry doing in education? Secondly,
what is in education policy? مجھے پلیز تھوڑا سا خاکہ دے دیں اس کا so that I understand, just out of my curiosity. میرے خیال میں دونوں چیزوں کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. وہ جواب صحیح ہیں یا نہیں وہ تو الگ بات ہے نا. اس وقت تو اگر پنجاب کا پروونشل ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ 50,000 اسکول چلا رہا ہے پنجاب میں. وہ یہ ایک الگ سوال ہے اب کہ ان کے پاس وہ اسکول ہونے چاہیے. جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا کہ بھائی مے بی فائنینس کریں لیکن اس کو چلانے میں مت آئیے. وہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو دے دیتے ہیں, نیچے لے جاتے ہیں, لوکل کر دیتے ہیں, آپ ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے جاتے ہیں. وہ پھر ٹھیک ہے, الگ بات ہے. لیکن فی الحال اس وقت تو ان کا بہت بڑا ایک کنسرن یہ ہے نا کہ 50,000 اسکول, 4 لاکھ ٹیچر, یہ سب کچھ وہاں موجود ہے اور باقی چیزیں بھی موجود ہیں. وہ پی سی ٹی وی بھی ہے اور پیک بھی ہے. But Faisal, speaking as an economist and as an educator, do you think it's sufficient? ہاں جی, نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ندیم, میرے خیال میں بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں نا ہسٹوریکلی ہو سکتا ہے کسی ایک وقت میں جب ٹیکنالوجی فرق تھی یا کوئی اسٹیٹ آف نالج فرق تھی تو اس وقت بہت ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں جو پھر بیوروکریسی میں کانکریٹائز ہو جاتی ہیں اور انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز پھر وہ اپنی ایک بقا کی جنگ بھی لڑتے ہیں, اپنے آپ کو انٹرینچ بھی کرتے جاتے ہیں اور وہ فاسلائز بھی کسی حد تک ہو جاتا ہے. یہ ہم نے انسٹیٹیوشن میں بہت دفعہ دیکھا ہے نا. آپ نے پوری وہ اس پہ پورے کتابیں اور آرٹیکلز بھی ہیں کہ کس طرح انوویشن مرتی کیسے ہے ان سم ویز اگر بہت زیادہ وہ فاسلائز ہو جائیں. تو اس میں اب سوال یہ ہے کہ کس وقت یہ اس کو ان بنڈل کریں, اس میں سے کچھ چیزیں لوکل ہو جائیں, کچھ چیزیں جو ہیں مارکیٹس میں جائیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ جو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کمیشنز وغیرہ بن جائیں جیسے ابھی شہناز نے کہا. سو ایک قسم کا ایجوکیشن جو اس وقت پورا کٹھے کا کٹھا ایک سیکٹری کے نیچے ہے, آپ کو اس کو کافی زیادہ ری تھنک کر کے ان بنڈل کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز اپروپریٹلی کہاں آپٹیملی پرووائڈ ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے, اور اس کا گورننس اور انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کیا ہوگا. جہاں تک ایجوکیشن پالیسی پہ میں آتا ہوں, ایجوکیشن پالیسی کی جو بات ہے میرے خیال میں کوئی اس میں یہ اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے نئی سوچ کی چیزیں لانی ہے, کچھ کرنا. امیجن there was a very innovative institution, say پائڈ کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا جو صرف ایجوکیشن پہ فوکسڈ ہے اور اس کا مینڈیٹ یہ ہوتا کہ یار آپ نے نئی نئی چیزیں سوچ کے جو پاسبل ہوں وہ آپ نے مارکیٹ میں لانی ہے ٹو بیکم اے ماڈل اور ایز این ایگزامپل اور تھنگس لائک دیٹ فار school systems and schools and governments and local governments to think about. ٹھیک ہے, اس میں ماڈل کریکولا آ سکتے ہیں, اس میں ماڈل ٹیچر ٹریننگ ہو سکتی ہے, اس میں ماڈل کتابیں آ سکتی ہیں, اس میں پڑھانے کے طریقے آ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال آ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ چھوٹے چھوٹے بے شک پائلٹس کریں, بے شک ماڈلز بنائیں, بے شک ان کا پروف آف کانسیپٹ کریں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کسی جگہ پہ, چاہے وہ ایک جگہ ہو چاہے وہ 10 جگہ ہو کہ پروونشل کیپٹلز میں ہو, وہ آپ کر کے اس ڈیبیٹ کو انوویٹو بھی رکھتے ہیں, اس میں نئی نئی چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. اس کی ایک فارم تو جیسے انڈیا میں ہم نے دیکھی ہے کہ انڈیا میں جو یہ جو کتابیں وغیرہ فیڈریشن پروڈیوس کرتی ہے وہ انہیں ماڈل کتابیں کہتی ہے تاکہ اسٹیٹس کی مرضی ہے وہ لینا چاہتے ہیں لے لیں, نہیں لینا چاہتے ہیں اپنی بنا لیں. لیکن ظاہر ہے زیادہ تر اسٹیٹس جو ہیں وہ ان سے سیکھتی ضرور ہے. سو وہ رول آپ اس کے لیے منسٹری نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک باڈی چاہیے جو انوویٹو طور پہ یہ سوچ سکے. شہناز نے ابھی وہ کمیشن کی بات کی, وہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ چل سکے, اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے, اس کے ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہو, لیکن کام تو وہ کرنا. مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ پرابلم یہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ایجوکیشن میں مکھی پہ مکھی ہم مارے جا رہے ہیں بڑی دیر سے کہ نئی انوویشن نئی سوچ کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی. نہ وہ منسٹریز میں ہو رہا ہے, نہ وہ کہیں باہر ہو رہا ہے, اور نہ ہی وہ پھر ہماری ڈونر سے آتا ہے یا باقی جگہوں سے. تو وہ ڈیبیٹ وہیں انہی 4-5 چیزوں میں بار بار گھومے جا رہی ہے. جیسے شاہد صاحب نے کہا تھا کہ باتھ روم بنانے ہیں یا باؤنڈری وال بنانی ہے, ٹیچر ٹریننگ پہ 30 سال سے ہم پیسے لگائے جا رہے ہیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ لگتے جا رہے ہیں لیکن ان کا ریٹرن ہمیں کوئی خاص نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا میں اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں. اس کے لیے منسٹری ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. آخری میں ایک تھوڑی سی بات ضرور کروں گا
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انپیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پبلک سیکٹر کاسٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کاسٹ 1/9 ہے پرائیویٹ سیکٹر, جو ابھی شاہد صاحب نے بھی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبرز ان کے بالکل ٹھیک ہیں. میرے خیال میں مین ڈفرنس آ رہا ہے جو سیلری بل ہے اس کا. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر ٹیچرز کی سیلریز کافی کم ہے, آئی تھنک 1/3 یا اس سے بھی کم ہے کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر سیلریز. بٹ دیٹس اے ڈبل ایج سورڈ I must say. So we have to be careful. یہ ضرور آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ بے شک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے جائیں, لیکن اس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو زیادہ تر لو فی اور این جی او وغیرہ باقی ہیں وہ منیمم ویج بھی نہیں ٹیچر کو دے رہا. تو ایک اس کا وہ ایفیکٹ بھی آئے گا کہ پھر ٹیچر کون بنے گا, کون بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے جس کو اور کوئی نوکری نہیں ملتی تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. آپ اس کو کہیں پرپیچویٹ نہ کریں بائی ریموونگ. اگر پبلک سیکٹر سیلریز بھی آپ کم کر دیتے ہیں یا پبلک سیکٹر ختم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے ہم کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں, تو پڑھائے گا کون ٹیچر, سیلریز کا کیا ہوگا. وہ آپ 5,000 6,000 میں ٹیچر رکھتے ہیں, 15,000 میں ڈرائیور رکھ رہے ہیں آج کل. کیا یہی تعلیم کے لیے کیا یہی ہونا چاہیے؟ وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ضرور سوچنی پڑیں گی. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ سم انوویٹو باڈی ٹو ڈو دیٹ. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ دیر فور کنٹینیو ود دس ماڈل, کیونکہ وہ ظاہر ہے نہیں چل رہا, لیکن وہ چینج لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انوویٹو آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز بھی چاہیے جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں. I would have loved to respond to what Faisal's last comment is, but I will not, because یہ دیکھو بات یہ ہے نا, یہ ہم بحث کرتے رہیں گے کتنے پیسے دے رہے ہو. At the end of the day, it's outcomes. I'm saying improve the opportunity for the less children from less privileged households. For heaven's sake, technology will take care of it. اس سے نہیں ہوگا, یہ ہم فکر کرتے رہیں گے باقی چیزوں میں, یہ نہیں ہوگا. Anyway, I mean, I would have responded in detail to Faisal's comment about Okay, great. Anyway. But let me take some other people here. Ambreen Gilani, آپ بتائیے please, ایک تو role of government, دوسری policy, تیسرا I'd like to add another question which I think I should have asked earlier. These textbook boards, we have 4 or 5 textbook boards, which I'm not sure. I mean, I'm not an educationist, so I don't know. Are they producing quality books? Is that something that we should desire, Ambreen Gilani? Yes. So I'll take the first question first, which is the broader role of government. So, I mean, the way I see it, it falls in 3 areas, right? One is, of course, public school provision. And if you go to we've been talking about low-cost private schools and all these other NGO schools, but if you go to the remotest areas of Pakistan, none of those exist. There are no low-cost private schools, and there are few NGO schools, but they're not covering every remote area, every tehsil, so though in those areas you have to have public school provision and you have to improve it. Obviously it's not at the quality that one wants it to be, but you have to improve it. You have to start it from ECD. You have to incentivize parents to send their kids to school and then provide some type of quality in terms of numeracy, literacy, all of that, right? That's one area. But the second very important area is regulation. And when Shahid talks about it, he thinks it's only about fees for high-end private schools, but it's actually the low-cost private school network is huge, especially in the urban areas. And the government has to regulate it. Who else is going to regulate it? There has to be a minimum standard. I mean, even in the low-cost private schools, the quality or the outcomes are only slightly higher than the public schools. So someone needs to be regulating this sector, setting minimum standards, making sure the teachers are paid at least a certain amount so there's longevity. So all, this whole regulation area is very important. Also of the NGO schools. I mean, there has to be some kind of basic quality that each of these schools is providing, right? And the third area is actually how to incentivize, we'll be talking about this area in more detail tomorrow, public-private partnerships. Like how is it that good models of schooling provision, like for example, a lot of these NGOs like TCF, CARE, all of these, how can they be working in conjunction with the government to provide education?
So these are the key areas, and these are the areas that the government needs to work on. Obviously, it's not ready to do any of this. And in its idea, also regulation is probably just fee regulation, but regulation in other countries is of low-cost private schools, of all kinds of schools, is done by the government. And that's what's needed, I think. And then you talked about the textbook boards. I mean, even in this context, the low-cost private schools come in. Like we say that, yes, the education provision in low-cost private school is much cheaper and all of that. But a lot of it is because of the government investment in the textbook, in the curriculum, and all of that. So you have to, if you incorporate that cost into their cost is actually higher. So, I mean, yes, textbook boards are, they're not as good as they should be. And in some certain areas, there are a lot of problems, but they are providing a service. The focus should be on trying to improve it, where things can be sort of done in partnership with the private sector, with the NGO sector. Yes, one should do that. But where the service cannot be provided by anyone else, the government has to be improved in delivering that service. And the textbook boards are also like fall in the same space, right? Let me turn to Risham. Risham Najam, you are a young education, what should I say? You're in the grammar school system, you're a director, you've come in from overseas, you've been educated abroad. Can you tell us how you see this situation? What I hear from people is regulation. I don't know what regulation is. I don't understand what regulation is. In the US, they call the regulation, Risham, you might remember, they call a regulator that the fan that regulates a fan, they call it a dimmer. So are we looking for a dimmer? Do we know what regulation is? What does regulation mean? I just don't understand. And a government that is incapable of doing M&D, incapable of researching, understanding, can it regulate? So I don't know whether I'm ready to give regulation. So can you, as I said, you're a young person, come in and you know the system well by now. Tell us what you think of regulation, policy, textbook board, all these things. Risham? I have a lot of opinions about regulation because I think the private schools have gotten a brunt of it. And I am not against regulation. I do think it's very critical. But, you know, one of the things that somebody said earlier is that a lot of the issue with our policy and our Ministry of Education, amongst other government organizations, is everything is very quick fix. You know, there's very little time spent on researching, on analyzing, on looking at best practices. It's just, let's quickly churn something out. Other countries are planning for the education policy in 2050. We have found out in August that there's a curriculum the whole country has to abide by, which has to be done by March. I mean, you know, we are constantly firefighting. So I do not object to regulation. I think it's incredibly important, but if you don't have people who are regulating, who are experienced, who are specialized, it can be very counterproductive. So for example, in 2001, we decentralized. So what were the issues? I mean, you know, what was our way of decentralizing and doling out the policy? We didn't do a pilot. We just kind of said every country, every province, every school has to every region has to use the same policy. And, you know, you're all guinea pigs. Why are we not piloting? Why are we not, you know, making sure something is effective? You know, making changes before it's distributed widely, identifying which, you know, sections work and which sections need strengthening. So, you know, I think that to, you know, just sum up, I mean, I think we really need to look at the back end a lot more before we just quickly, you know, throw it out there and, you know, let's see if it works, because clearly it hasn't for decades. Okay. Abbas Rashid Saab of SAHE, Society for Advancement of Higher Education. Abbas Saab, you've been involved in education for a long time. I know you've done a lot of work in education. What do you think of policy, regulation, and the textbook board? I know you have your personal views. You want to regulate more and more, but just tell us about the capacity of the government to do the thing. Sergi, thank you so much.
I basically, so I had actually a question. I think a lot of the things that friends have said about policy and about the boards, I really don't have a huge disagreement there. And I think a lot of those angles and ground has been covered. But so the sense I get, Nadeem, aapki jo baat hai, the premise that a lot of friends have put forward is that as Shahid has often remarked कि हुकूमत जिस चीज में हाथ लाएगी वो मिट्टी हो जाएगी. So so there is the premise here. I think there is a refrain that one senses, and not entirely unjustified, but yes, I think it could be nuanced. So if the government can't run schools, if the government can't regulate schools, if the government can't produce textbooks, I think thodi si yahan pe there is an implicitly, I think what is being said here is that leave everything to the private sector. And for the sake of argument, I think let us think about that a little more in greater depth. कि ये सारा काम फिर private sector कर ले. और अभी जैसे बात हुई, I think somebody quite rightly observed that the problem is that the achievements of the private sector, especially when it comes to the great overwhelming majority of low-fee private schools, the achievements are only marginally better. So yes, you can do, the performance is actually quite bad at much lower cost. So the argument should not be actually about ke assi yahi kuch karde rehna hai at much lower cost. The issue is how do we go forward, because we are, whether it is the majority of government schools or the majority of private schools, we are nowhere close, not even remotely close to where we ought to be in terms of age and grade capability among children, right? So can we spend a little bit of time on the shortcomings in the private sector and what the private sector will need to do and what we will have to do with the private sector in order to get it, anywhere close to the starting line in terms of what capabilities that we want to see in our children at different grade levels. What if the government can't do it? What should we do? And that's a problem. It's not that, hey, we leave it to the private sector. Unfortunately, I mean, if there's an orphan, you got to survive. If he doesn't have parents, period. What can you do? Shanaz, ab bataiye. I wanted to just come in on this whole issue of regulation. देखिए, regulation से तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता. हमने regulation कर over regulate कर सब कुछ खत्म कर दिया है, मार डाला है. इंटेलेक्चुअल स्टंटिंग हो गई है, सिस्टम चेंज नहीं कर रहा, अडेप्ट नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा. Regulation should only look at an arrangement where you set certain standards, you define your standards for every subject, every grade level, and you test the learning outcomes. You only test learning outcomes through certain national standardized tests, which can be delivered maybe at class 4 and class 8 or class 3, 5, and 7. There are different models of doing this. Once you set common minimum standards, that is what all schools should aspire towards. चाहे वो private school हो, निजी school हो, public sector school हो, garrison school हो, मदरसा हो, कोई भी हो, किसी किस्म का भी इदारा हो, तालीमी इदारा हो. तो अगर आप कहें कि पाकिस्तान के लिए क्लास 3 का जो बच्चा है उसने मैथमेटिक्स में कम से कम ये कॉन्सेप्ट्स उसके पास होने चाहिए, और इसी तरह उर्दू में या इस सोशल साइंसेस में, पाकिस्तान स्टडीज में, या जो कुछ आप डिफाइन करना चाहें, आपके बेसिक कंटेंट एंड स्किल्स दोनों चीज़ें आपने डिफाइन करके स्टैंडर्ड सेट करने हैं. और फिर हर डिस्ट्रिक्ट अपने स्कूलों में वो इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेनिंग करे, टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, परमानेंट सर्विस में रखे, जैसे वो रखना चाहती है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करे, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स भी करें, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स भी करें, ताकि उनके बच्चे नेशनल टेस्ट के मुताबिक उस एग्जाम में हिस्सा ले सकें.
So you test for outcomes, you don't control inputs. Regulation controls inputs. And we have not been, no country has been able to achieve great success by controlling inputs. Everything is controlled through outputs and outcomes. That's one comment I want to make here. The second is, I do agree with Shahid Kardar. I think that this whole question of how much we can use IT to enable teaching in the classrooms can be looked at. I didn't discard it totally, but I did say that it's probably not a solution that can be applied everywhere. I'll add to that by saying that the current stock of teachers and cadre of teachers that you have are not IT skilled enough. Maybe you need secondary school students to come in and teach primary school students. We need a completely new approach to doing things. The third comment here is that you're right, absolutely, and Abbas said this, private sector needs to be looked at very carefully as well. But private sector is there because public sector is not performing. Private sector doesn't always give you better outcomes. Private sector delivery is not always much better. Private sector is more efficient. वहाँ पे teachers absent नहीं होती, वहाँ पे classes चलाई जाती हैं, स्कूल खुलता है, टाइम से खुलता है, कुछ ना कुछ पढ़ाई होती है. लेकिन quality indicators पे, the final word is not in. Many government schools are doing a better job than many of the low fee charging or mid-level fee charging private schools. But I think if you say across the board and then you test Pakistani students and see that if in Japan, अगर एक बच्चा जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडिया, दूसरे मुल्कों में क्लास 3 में मैथ में ये कॉन्सेप्ट्स कर रहा है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता उसी लेवल के कॉन्सेप्ट्स? मादरी जबान में सिखाया जाए, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी आप इंट्रोड्यूस करें, ये मोडेलिटीज हैं उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जिसके जरिए बच्चा सही तरीके से एक कॉन्सेप्ट सीखेगा, एक स्किल अपनाएगा. तो मेरा हमेशा यही, मेरा तो अपना जो अप्रोच है पूरे सिस्टम पर यही है कि इनपुट को मत कंट्रोल करें, आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड सेट करें, उसको असेस करें, उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक करें, तो लोग खुद ही देख लेंगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सा स्कूल सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज फिर देखना शुरू करेंगी कि हमारे इलाके में जो स्कूल्स हैं वो क्यों नहीं नेशनल स्टैंडर्ड्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने इन टीचर्स को फायर करना है, हमने क्या करना है. दिस इज वेरी लिटिल टू डू विद फैसिलिटीज एक्चुअली. Yes, some basic facilities are required, but I fully agree with Shahid that these, patchwork solutions to World Bank and IMF and Fund and DFID come in with, we have to think for the solutions ourselves. Very good. Thank you, Shahnaz. I think that point is well taken. I think you raised a very important point, input versus output. Regulation is a very complex subject. I think people in Pakistan use regulation very freely and very easily as if it's easy to do. There have been books written on regulation. Regulation is a very complex subject in every area, and it's a very difficult thing to do. In fact, if I had to put it, regulation brings us back to Plato's philosopher kings. We need philosopher kings to regulate. Regulation can't be left to grade 19, 20 bureaucrats. That is impossible. That's a mistake that you make. Unfortunately, let me come to some questions that people are raising. Zahra Aftab, but let me also put it to you very simply. Abbas Rashid of Sahih has said to us that private sector can't be trusted. But Zahra, you should, whatever question you ask, but let me also put it this way. You get what you pay for. So the private education obviously depends on what you pay for it. I know it's inequitable and unjust, but there are very good private schools that charge a high fee and deliver a very good education. So Abbas Saab's point is valid. And yes, the do-gooders feel bad about it, but the market does take care of quality. Zahra Aftab, ask your question, then we'll take this issue up. Assalamu alaikum. Can I, your comment fits in with what I wanted to say कि private sector के जो सबसे महंगे स्कूल भी हैं, आप कह रहे हैं कि if you pay for it then you will get quality education, तो ये elite स्कूल जो हैं ये हमारे बच्चों को अंग्रेजी तो सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे कल कुरतुलैर ने कहा, क्या वो हमारे बच्चों को अच्छी वैल्यूज दे रहे हैं, क्या वो, and क्योंकि अभी we are back at the drawing board, तो let's think about it, let's think about character building. क्या हम अपने बच्चों को बस अंग्रेजी और कंपटीशन ही सिखाना चाहते हैं, क्या हम उन्हें शेयरिंग और एम्पैथी नहीं सिखाना चाहते? तो आई थिंक जस्ट
just going for the private sector is no solution. I mean, we need regulation. We need to think about these issues. Dusra, I just want to comment on what Shahid Saab said, Shahid Kardar said, technology or online teaching is no panacea. देखिए, पब्लिक स्पेस में औरतें पहले ही बहुत कम है, लड़कियां बहुत कम है. पब्लिक स्पेस इज अ मैस्कुलिनाइज्ड स्पेस. अब आप लड़कियों को घर में बिठा के उन्हें टैबलेट दे देंगे तो वो क्या करेंगी? वो घर का काम करेंगी या वो टैबलेट पे लेक्चर सुनेंगी? और अनम्यूट अपने आप को करने से पहले वो देखेंगी कि पीछे बैकग्राउंड में बच्चा तो नहीं रो रहा, अंकल तो नहीं कुछ बोल रहा. यही होता रहेगा. तो आई थिंक वी नीड टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड जहां हम टेक्नोलॉजी जरूर इंट्रोड्यूस करें, लेकिन बच्चों को घर में बच्चियों को we'll take up technology day after tomorrow, so don't worry about it. Okay, great. Fahim Jahangir, what do you have to say about regulation and this question about you get what you pay for, so leave it to the market. If you got a dumb regulator, don't worry about the market. Thank you so much. Very interesting debate. I hope you can hear me. I think yes. I started my professional career in 2003, and what happened was, like in my early few days, I happened to attend a seminar in P Block Auditorium where I listened to Madam Shehnaz Wazir Ali, and along with Dr. Ishrat Hussain. There was Secretary Education there, some World Bank consultants was there. And I learned so many things, which I am still hearing after 17 years. Same, Punjab is performing better than other provinces. Student enrollment, we were talking about numbers at that time, quality aspect came later. Teacher absenteeism, physical infrastructure, curriculum, public-private school comparison, etc. The thing is, I'm very happy to hear Shahid Hafiz Kardar Saab. He's so clear. And I'm always very, amazed to hear Madam Shehnaz Wazir, especially about her clarity about the education system in Pakistan and how it should work and how should we reform that. My question to Madam Shehnaz Wazir Ali and other panelists would be, if we can, if we really want to, make this debate productive, fruitful, what went wrong? In 17 years, what difference we made? Why people like you, Madam Shehnaz, and other people like Hafiz Kardar and other people who were placed in highest positions, who were make decisions, who were able to, bring some difference. Why you and others so passionate educationists couldn't make a difference? Why we are still discussing all these things which I learned on the very first day of my professional career? What went wrong actually? I'm interested in knowing that. And I also agree with Zahra that we are focusing more on skills and knowledge, and we are giving almost no attention to the attitudes. So that's it. Okay. Let me bring in Hamid Khan Saab. He's a member of the Parent Association of Pakistan. Hamid Khan Saab, please, private school ki taraf mat jaye, but can you please tell us about what is the role of policy and regulation and government? Is our government capable of regulation? What are we trying to do? Thank you very much, Dr. For giving me an opportunity. It's a very interesting debate. Panelists को ज़रा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि आर्टिकल 25A की जो डेफिनेशन है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में हमने अपनी तमाम डिस्कशन को और चीज़ों को आगे लेके जो है वो बढ़ना है. तो उसमें सबसे पहले if you allow me to share my screen. Go ahead, चलो जल्दी से करें. ठीक जी, ये आर्टिकल 25A की इंटरप्रिटेशन है by Law and Justice Commission of Pakistan. The state has the primary responsibility to establish educational institutions and efficiently manage their operations. At the same time, private educational institutions are required to be regulated through appropriate regulatory mechanism
The state may discharge its obligation through state-owned and state-recognized private educational institution. However, when the state grants recognition to the private educational institutions, it creates an agency through these institutions to fulfill its obligation under the Constitution. Therefore, in order to discharge the state obligation with regards to availability, accessibility, affordability, and adaptability of education, it falls within the state's responsibility to ensure that any private educational institution which has been set up with the government regulator permission is not involved in profiteering, capitation, or exploitation of any kind. अब मेरा जो क्वेश्चन है फ्रॉम द पैनलिस्ट वो ये है कि हमने जो भी काम करना है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क करना है जो कि बड़ा क्लियर है और डिफाइंड है. जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है फ्रॉम द पेरेंट्स एंड वो ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एंगेज द राइट stakeholders, including parents. Parents were never engaged and recognized as a major stakeholder in policy and service delivery. जो दूसरा बड़ा चैलेंज जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि सारा फोकस स्टेट का और नॉन स्टेट एक्टर्स का वो सब का सब है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और जो है पब्लिक स्कूल सेक्टर पे सारा फोकस है. जो मेजॉरिटी number of enrolled student hai. Now that comes from a third party assessment. ASER Pakistan 2019 ke jo stats hai usme 60% of the school age going children are enrolled with private schools. Un 60% ki monitoring and evaluation, kya standard follow ho rahe hain, kya governance oversight hai, that has been completely ignored and left at the mercy of the प्राइवेट सर्विस डिलीवरी नेटवर्क. जो हम क्या चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया से वो हम कुछ ग्लोबल मॉडल्स हैं. अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको क्विकली उसमें गो थ्रू कराता हूँ. देखिए ग्लोबल मॉडल्स तो रहेंगे, हैं ग्लोबल मॉडल्स, पर ग्लोबल मॉडल्स कोई फर्क नहीं बता रहा हूँ. अपना मॉडल दरियाफ्त कर. चले हम क्या चीज डिफरेंट कर रहे हैं. हम ये चीज डिफरेंट कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन को जो है ना नॉट फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया हुआ. ठीक है, हमने पेरेंट्स की इंगेजमेंट नहीं रखी हुई. हम सब लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज तो करते हैं बट कभी हम ये देखा नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी इम्प्लीमेंट हुई भी है कि नहीं हुई. प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग यहाँ पे बहुत शोर मचा रहे हैं ओवर रेगुलेशन का. अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे पूरे स्कूल के उससे गुजर के अब यूनिवर्सिटी में चले गए हैं. कहीं पे भी मुझे कहीं गवर्नेंस या रेगुलेटरी ओवरसाइट नज़र नहीं आई. हुकूमत ने तो अपने स्कूलों के लिए टीचर्स की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, सब्जेक्ट स्पेशलिटी का क्राइटेरिया रखा हुआ है बट मेरे बच्चे थ्रू आउट हाई फी स्कूल में पढ़े हैं. अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी भी ये क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल में नहीं देखा जो कि हमसे कहते हैं कि जी हमारे लर्निंग आउटकम्स बहुत कम है बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द रियलिटी. पब्लिक स्कूल के भी आउटकम जो हैं वो उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने के हाई फी स्कूल के हैं जो कि वो क्लेम करते हैं कि जी हम आपको बहुत अच्छे दे रहे हैं. आज भी आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में इनटेक देख लें, 90% इनटेक उनका जो आ रहा है इन प्रोफेशनल कॉलेजेस इन पाकिस्तान वो आपके पब्लिक स्कूलिंग ही से आ रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो. तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं, एक तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, पेरेंट्स की इंगेजमेंट नहीं है. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2012 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ में पेरेंट्स को एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर रिकग्नाइज़ किया गया बट अनफॉर्चुनेटली वो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हम लोग. तो उसमें अगर उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा पेरेंट की इंगेजमेंट आ जाए तो पेरेंट्स एज अ मेजर स्टेक होल्डर वो अपना फीडबैक भी देंगे और इस सिस्टम को एक बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश भी करेंगे. ये मॉडल 1980s में इस्लामाबाद के 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई हुआ. इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G6 एंड इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ इन F8 एंड ट्रस्ट मी दैट मॉडल वर्क. उसमें एक बोर्ड था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उस बोर्ड में एजुकेशनिस्ट भी थे, मिनिस्ट्री के लोग भी थे और पेरेंट्स भी थे who determine teachers की performance, learning outcome and they have the administrative
kind of autonomy to decide who to hire, what kind of curriculum to be taught to the student. एक और चीज़ जो बहुत सारे पैनलिस्ट ने अक्सर हाईलाइट भी की है कि जी पब्लिक स्कूल से लोग इनरोलमेंट प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहा है, उसकी एक वजह ये है कि स्टेट के स्कूल में वही एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, मैट्रिकुलेट. आप आज से IB O A लेवल्स भी पढ़ाने शुरू कर दें, लोग वापस आ जाएंगे. बी पब्लिक स्कूल में अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें, मैं उस स्टैटिस्टिकल नंबर्स में नहीं जाऊंगा, तमाम लोगों के पास स्टैटिस्टिकल डेटा है. प्राइवेट स्कूल भी दे आर एज बैड और इवन दे आर नॉट बेटर ऑफ देन द पब्लिक स्कूल when you compare the statistical number in terms of qualified teachers, experienced teachers, the learning outcomes and the infrastructure. तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स काइंडली जो 60% बच्चे एनरोल हैं प्राइवेट स्कूलों से लो फी, मिडिल फी एंड हाई फी में, प्लीज उसको अपने मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन रडार पे लेकर आएं. ठीक है जी, ठीक है जी, क्योंकि ये उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. बिल्कुल ठीक है हामिद खान साहब, आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग, बट आई आल्सो डोंट एक्सेप्ट दिस पॉइंट दैट यू आर मेकिंग दैट पेरेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व्ड. आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली हमारे मुल्क में एक इनसेंसिटिविटी का निज़ाम है. अमेरिका में, बरतानिया में, जहाँ भी आप देखें, पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व्ड बिकॉज दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट. अब यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी आपकी कल बात हुई थी, कितने पेरेंट्स आ जाए हैं इस चीज़ पे, कितने पेरेंट्स को इवन कंसर्न है एजुकेशन के साथ? आई एम अफ्रेड नहीं है. आई एम अफ्रेड प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट लाइक टू पार्टिसिपेट. वी आर नॉट अ पार्टिसिपेटिंग पीपल. एज Alexis de Tocqueville said, America is a participating country. It used to be participating all the way in 1830s, 20s. We have never really participated. We are a receiving people. तो ये कहना कि हमें इन्वॉल्व करो गलत बात है. पेरेंट्स को अगर हम इन्वॉल्व भी करें, वो इन्वॉल्व नहीं होते. हम बड़ी कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, पेरेंट्स क्या होते हैं. तो लेट्स नॉट ग्लोरीफाई दैट टू. और दूसरी चीज़, हर चीज़ स्टेट की उससे नहीं चलती. लेट मी कम टू जुबैर फैसल अब्बासी साहब, बोलिए. Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak here. मुझे थोड़ा सा समझना मैं चाहता हूँ, ये आप इस पे पैनलिस्ट रोशनी डालिएगा कि एक तो एजुकेशन का वो फंक्शन है जिसमें वो लोगों को एनेबल करते हैं, उसकी बेसिक कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं, जिसमें बेसिक न्यूमरेसी उसको आती है, बेसिक वो लिटरेसी अचीव करते हैं लोग. कुछ बेसिक कैपेबिलिटीज आपको चाहिए टू लिव लाइफ, फ्लोरिशिंग लाइफ, आप जिसमें फ्लोरिश कर सके इंसान. दूसरा, एजुकेशन का बहुत बड़ा सेगमेंट है इस वक्त. ये सारी की सारी एजुकेशन जो है, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है, जहाँ से आपकी पूरी इकोनॉमी चलती है, मुल्क तरक्की करते हैं, वो सारे का सारा इस सेक्टर में से बहुत बड़ा एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ से आता है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक ना हो, जिस मुल्क में ऐसे बड़ी बड़ी फर्म्स ना हो जहाँ पे लोगों ने जाके एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलनी है, जो आप लोगों को उस एजुकेशन का अपटेक मुहैया ना करता हो, वहाँ पे बच्चों को क्या आप कंप्यूटर साइंस इतनी पढ़ा के क्या करेंगे जहाँ पे एप्पल का कोई कंपोनेंट ना बनता हो. तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है वो स्पटर कर रहा हो, वो ठीक काम ना कर रहा हो, तो एजुकेशन जो उस निज़ाम का हिस्सा है जहाँ से आपकी ग्रोथ मोमेंटम बनता है, बिल्कुल सही. एजुकेशन ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, रेशम बेबी, रेशम, you wanted to say something? रेशम, has Risham left? I think she's left. Okay. Neelam, Dr. Neelam Hussain. Oh, this is the other Neelam Hussain. The other Neelam. Okay, fair enough. Go ahead, Jeannie. Okay. No, I just want to say very briefly about I agree that the state cannot abdicate its responsibility to education. It has to provide the funding. It has to provide basic minimum standards overall, but then it has to facilitate and enable education in its different forms in a mixed system, private भी हो, public भी हो,
जहाँ कि वो एक चल सके निज़ाम in a, and as Shanaz I think pointed out, where the outputs are measured, the inputs are left to the school. But in all this, we do need teachers' education. Our current body of teachers is the product of this system. They are not equipped, no matter how much freedom they get or how much encouragement they get to be innovative, they are not equipped to do that. So, यहाँ massive investment state की चाहिए. State उसको deliver खुद ना करे, it should organize, employ, whatever, but then leave it to whoever the organizing body is to decide how it is to go. But teachers' education and participatory learning and mother tongue learning, training, I think has to be focused upon. Because अगर आप यूनियन काउंसिल के लेवल पे भी लाएं, जिले के लेवल पे भी लाएं, हम खासी ब्रूटल सोसाइटी हैं. बच्चा क्यों भागता है पढ़ाई से? One of the reasons is the fear factor. उसे मार पड़ती है स्कूल में. So that has to be kept in mind. That's all. Thank you. Very good जी. तो पत्थर से हम जूस जरूर निकालेंगे. वो पत्थर जूस देने के काबिल नहीं, पर जरूर निकालेंगे. रेशम नाजम. Gee, sorry, I got disconnected. I just wanted to address, because a couple of participants addressed private schools. And I just wanted to, one of the comments was that private schools, for example, they're gone towards academics and competition, but not addressing character building. But that brings us to the question, who is to decide what that character building is? I mean, it's all, is it Islamic character building? Is it ethics? Private schools have been a huge kind of, what is the word? I mean, they brought a lot of awareness towards environment, for example. I'm a student, a product of private school in Pakistan, and we were taught about the environment when nobody was talking about it, 100 years ago, 30 years ago. So at this, we're also, as Imran Khan attributed, in so many words, that private schools are responsible for the Aurat March. I don't think he meant it as a compliment, but 50% of our population is women, and they are a minority nonetheless. So, who is to decide what character building is acceptable and what's not? That is the fundamental factor of a private school. It's going to have its own code of ethics, its own kind of philosophy, and that is the parent's choice, whether you want to put them there or not. And secondly, I want to just address the sort of, some people have said that, high fee private schools are not giving good quality. I mean, I think that is very debatable, but one problem that private schools face is that we are sort of responsible for not just giving education, but being the support in the entire field of education. So we are meant to, sorry? Oops. Go ahead. We are meant to, we are meant to train teachers. In most countries, you have specialized schools. You have a good education system to begin with. As somebody said, if you don't have critical thinkers in society, I mean, a good teacher also needs to be a critical thinker. So first we are meant to hire teachers, then teach them critical thinking, then teach them teaching, pedagogy, etc. So we don't have that support. We don't have support for special needs. We don't have support for counseling. Counseling is a fairly new field in Pakistan. Most schools in the world are not able to, train people to counsel. They are able to hire people who are trained in counseling. But, I mean, when APS happened and schools were, obviously under high threat, it was a very terrifying time. And the government told us that we are responsible
for the safety in a school, where your army cannot protect a school, where an army school was penetrated. What do we know about keeping terrorist threat at bay? You know, so these are just things that I totally agree. I'm a parent first. And I know that there are shortcomings, but I think that, you know, the larger society also generally tends to support systems of education. Okay, fair enough, fair enough. Shahid Hashmat Saab. Shahid Hashmat Saab chale gaye. Furqan Saab. Please allow me to unmute. जी go ahead, बोलिए बोलिए. Okay, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बामकसद डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस पूरी डिस्कशन में ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इज रिवॉल्विंग अराउंड educational institutions, educational facilities, and the policies of the government to regulate education in urban areas. जिन हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं या हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो इन दी अर्बन एरियाज. हमारी जो 60 to 70% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है, और आज से 30-40 साल पहले जो पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल ऑपरेट करते थे रूरल एरियाज में, और जैसी भी एजुकेशन वो दे रहे थे, वहीं से हमारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस हुए, वहीं से इंजीनियर्स प्रोड्यूस हुए, वहीं से ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस हुए, वहीं से मिलिट्री लीडर प्रोड्यूस हुए, एंड दे परफॉर्म फेयरली वेल. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम बात तो कर सकते हैं, हामिद साहब ने बात की है पेरेंट टीचर मीटिंग की या पेरेंट इन्वॉल्वमेंट की, आपने भी उसमें जिक्र किया है, और अभी थोड़ी देर पहले काउंसलिंग की बात की गई है, वैरायटी ऑफ अदर थिंग. ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट रिमेन्स, मुझे सिंध के अंदर तकरीबन 15 से 20 स्कूल जो हैं उनको ओवरसी करने का मौका मिला है फॉर फ्यू इयर्स, एंड आई हैव रिमेन्ड इन्वॉल्व्ड in some of the school, in establishing some of the school in the farthest and the remotest areas of Pakistan. पाकिस्तान के southern most edge के ऊपर नगर पार्कर में मैंने एक स्कूल जो है वो बनाया था आज से 5-6 साल पहले, और उस वक्त आमतौर पे ख्याल लोगों का ये था कि यहाँ एक कम्युनिटी ऐसी रहती है जिसका रिलीजन जो है वो डिफरेंट है, तो हमें स्कूल बनाने की क्या जरूरत है. तो स्कूल तो हमें जरूरत है फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके पैनलिस्ट से कि वो काइंडली जो रूरल एरिया में स्कूल हैं वहाँ स्टैंडर्ड जो हैं वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं. स्टैंडर्ड तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, गोस्ट स्कूल हैं, गोस्ट टीचर्स हैं. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस कदर बुरी हालत में है कि उनके स्कूल के क्लासरूम्स में बैठने की बिल्कुल जो है वो गुंजाइश, क्या मतलब फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है. और थोड़ी देर पहले आपके कल या परसों किसी स्पीकर ने बहुत बड़ा कहा था, इवन द बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो वहां पे स्कूल में 90% द स्कूल डू नॉट हैव द टॉयलेट्स इवन. तो काइंडली ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी हैं, ये सब भी हो जाएंगी. उस 60-70% आबादी जो है उसकी भी बात करें, which is totally deprived of both public sector schooling and private schooling. Thank you. बिल्कुल सर जी. Let's bring Kurutulan Saiba here. She is actually doing it. Kurutulan Saiba, बताइए. बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम. पहली बात बहुत माजरत से, मेरे ख़ानदान में मेरी बहुत एक क्लोज कज़न की डेथ हो गई थी, मैंने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है आज. लेकिन ये इतना ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है कि मैंने अपने उस एसोसिएशन को अभी थोड़ी देर के लिए डिले किया ख़ानदान से, और मैंने कहा आई हैव टू बी हियर. तो आप सबका बहुत शुक्रिया. मैं यहाँ पे चाहूँगी कि अपना बलूचिस्तान का अपना तो नहीं, मेरा तो नहीं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और कम्युनिटी का एक एक्सपीरियंस शेयर करना, जो 5-6-7 साल का प्रोजेक्ट था और वो आज भी अपने रिजल्ट्स दे रहा है. बहुत क्वालिटी के नहीं है, बहुत आला नहीं है, लेकिन एक सिमत मेरे ख्याल से दिखाता है वो. और उसकी बेसिस जो थी, वो टीचर जो थी वो एंटरप्रेन्योर थी. गांव की लड़की जो मैट्रिक है, हम उसके पास उसको हमने उठाया, उससे कहा तुम स्कूल, तुम्हारा गांव, बताओ करना है कुछ. एंड शी स्टूड अप
वहाँ कभी कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था, और इस टीचर ने बहुत माजरत से, इस टीचर ने, इस लड़की ने, जो कि उस वक्त सिर्फ 8वीं जमात में मिली थी, ये मैं बात कर रही हूँ 92 की, और उस लड़की ने पूरे गांव को मोबिलाइज किया, इनरोलमेंट किया, मोटिवेट किया, और बेस लाइन बनाई, और मर्दों को ऑर्गेनाइज किया गांव के, और छोटे छोटे से जगह लिए, और छोटे छोटे से, चाहे वो मट्टी का कमरा, चाहे वो एक झोपड़ी सी, कोई भी चीज, उसने अपना स्कूल कायम किया, और बच्चों को लेके आई और बैठ गई पढ़ाने के लिए। हमने वहां से फिर डीओ साहिबा जो थी वहां की, वो आके बुक्स दे देती थी, और वो उन्होंने आके उसको देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट के साथ फंड होना था। लेकिन हमने कोई 6-8 महीने लिए कि जिसके अंदर हमें देखना था कम्युनिटी का, लोगों का स्कूल और तालीम की तरफ, और क्या यहाँ पे एजुकेशन की कोई लीडरशिप उठ भी सकती है या नहीं, और वो एजुकेशन की जो लीडरशिप है वो हम टीचर को बनाएं, हम टीचर को एंटरप्रेन्योर की तरह से बनाएं, और वो उसके साथ साथ उसका लॉन्गिट्यूडनल एक उसका टीचर्स डेवलपमेंट का एजुकेशनल प्रोग्राम हो जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जरिए हो। उसको हम गवर्नमेंट के रहमो करम पे या किसी टीचर्स के कॉलेज के रहमो करम पे ना छोड़ें, वो एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बन के उठे। टीचर का जो स्टेक होता है कमाल का होता है अगर वो इस तरह से देखती है। अगर वो नौकरी की तरह देखती है, किसी की सिफारिश से आ गई है, कोई काम नहीं मिला तो चलो टीचर ही बन जाए, इस किस्म के कैडर को हमें टोटली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। हमें इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी। पैशनेट लोग बहुत हैं जो कंसर्न है अपने इलाकों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमें उनको उठाना पड़ेगा और री एनर्जाइज करना पड़ेगा। नए फ्रेश एनर्जाइज्ड लोग, पैशनेट लोग, फिर उनकी एजुकेशन करें और उनको बनाएं एक प्रोग्राम के जरिए, एक पॉलिसी के जरिए। इंडिविजुअल्स मैटर इन दिस कंट्री, इंडिविजुअल्स मेक अ डिफरेंस। हमें इंडिविजुअल्स को उठाना होगा और टीचर्स को हमें स्टेक होल्डर बनाना होगा बुनियादी। तो मगर वो किस किस्म का टीचर है, आया कहाँ से है, क्यों बन गया है वो टीचर, किसने भेज दिया, ये वाली सब चीजें जो है ना हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ये और इन लड़कियों ने 2200 लड़कियों ने स्कूल्स बनाए और विदिन 3-4 इयर्स 3 लाख लड़कियां इन्होंने इनरोल कर दी लड़कियों ने, और सस्टेन रखा, वो इनरोलमेंट सस्टेन रखा, और सब इन टीचर्स ने किया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फुरकान साहब, लास्ट कमेंट, देन वी मूव बैक टू द पैनल एंड स्टॉप। जी फुरकान साहब, आर यू स्पीकिंग? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक्चुअली इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी ये मैम कह रही थी कि आप वॉलंटियर्स ले लें, लेट से मैं वॉलंटियर के तौर पे काम करता हूं, लेकिन मेरे बाद उसको कौन कंटिन्यू करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन। इसी तरह जब हम अपने सिस्टम की बात करते हैं कि जो किसी पेरेंट से आप पूछ लें कि आप अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं, तो फौरन आपसे कह रही कि मैं डॉक्टर बनवाना चाहता हूँ। वहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें रेगुलेशंस के उतने ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आते जिस तरह की हमारी दूसरी जो एजुकेशन है वहाँ पे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू है कि जो कुछ आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसके बाद वो आपको पे करेगा, और दूसरी साइड पे जो आप दूसरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मोटर मैकेनिक जो है अपनी गाड़ी उससे सही करवाते हैं, आप कभी कोई आपको इंजीनियर नहीं मिलेगा जो कि आपकी गाड़ी को सही करेगा। तो हम पूरे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग जरूर करवा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना होने की वजह से हम उसको पे नहीं कर रहे। इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है कि हम कंप्यूटर इंजीनियर्स तो बना रहे हैं लेकिन मार्केट में उनकी प्लेसमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो क्वालिटी जो कुछ भी वो हासिल करते हैं उसको वो प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। तो जब हम इसको लिंक करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू के साथ तो हमारा एजुकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये इन द लॉन्ग रन हम इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। Thank you very much folks. I think I'll turn back to Shahnaz and Faisal Bari for last comments before closing off. Kyun ji, Faisal, do you want to take the lead? Faisal here or is he gone? So he I think gone. Faisal is. Ji, Shahnaz, aap boliye. I think from our discussion, a couple of things have come out fairly clearly. एक तो ये है टीचर की अहमियत।
जो कि नीलम ने भी बात की और कुर्रतुल-ऐन साहिबा ने भी IDSP का एग्जाम्पल दिया कि टीचर की अहमियत किस तरह वाज़े भी हो सकती है और किस तरह वो एक मोटिवेशनल फोर्स बन सकती है एंड अ फोर्स फॉर चेंज थ्रू कमिटमेंट। मेरा अपना भी हमेशा से ये ख्याल रहा है कि टीचर भी, जैसे हम कहते हैं ना, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, स्टूडेंट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। इसी तरह टीचर की अहमियत जो है हमने बिल्कुल इस निज़ाम में तस्लीम नहीं की। और मैं अभी भी कहूँगी कि ये जो मॉडल है कि पब्लिक सेक्टर सर्विस में आ जाए टीचर और बस उसकी ज़िंदगी के लिए पूरा मुकम्मल एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो, ये मॉडल नहीं चल सकता। क्योंकि टीचर स्कूल ना जाए तो फिर भी वो टीचर रहती है, एब्सेंट रहे तो फिर भी टीचर रहती है, ना पढ़ाए तो फिर भी टीचर रहते हैं। इसी तरह निज़ाम चलता रहा है विद नो अकाउंटेबिलिटी कि टीचर क्या कर रही है। तो टीचर एजुकेशन, टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर्स की डिप्लॉयमेंट, टीचर्स को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है रियासत की। दूसरी, इसके साथ मैं एक बात ज़रूर जोड़ूंगी प्राइवेट स्कूल्स की। निजी स्कूल जो हैं, देखिए आप बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, O levels, A levels, and some very, very good private schools that are teaching matriculation and intermediate. But how many private sector people have set up good teacher training institutions? None. अपने स्कूल में वीकन हाउस ने अपनी टीचर ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है, या सिटी ने किया है, या LGS बड़े सिस्टम्स हैं शायद उन्होंने किया है, लेकिन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं? स्कूल सेटअप होते हैं लेकिन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं होते। तो एक ये जिम्मेदारी जो है स्टेट को इनेबल करना चाहिए कि चाहे टीचर जाके प्राइवेट स्कूल में बाद में पढ़ाए या पब्लिक सेक्टर स्कूल में पढ़ाए, टीचर ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर मयार की होनी चाहिए। और अभी मैंने एक कमेंट देखा है हमारे पार्टिसिपेंट्स में से, फखरुद्दीन साहब ने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन और रेगुलेशन को मिक्सअप ना करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं स्टैंडर्ड्स की बात अलहदा करती हूँ कि टीचर्स के स्टैंडर्ड सेट करें, जैसे आप लर्निंग स्टैंडर्ड्स, लर्निंग आउटकम्स के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इसी तरह टीचर्स के भी स्टैंडर्ड सेट करें। लेकिन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी जो भी हैं में उनको आप इनेबल करें, फैसिलिटेट करें, फाइनेंस करें, रिकग्नाइज करें, और परमानेंट सिक्योरिटी ऑफ टीचर्स इन द स्कूल सिस्टम को ख़त्म करें। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई है कि प्राइवेट स्कूल्स को किस तरह देखना चाहिए, क्या इनका मयार बेहतर है या नहीं है। अभी तक हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है, इतना डेटा नहीं है। एसर की जो स्टडीज है वो आपको कुछ बताती है कि बाय एंड लार्ज प्राइवेट स्कूल्स ऑफ अ सर्टेन लेवल are providing you better education and their students are being able to demonstrate better learning outcomes. That's not the case across the board. बहुत सारे private schools हैं, low fee charging है, 500, 600, 700. मैं उन schools को necessarily standard से नहीं judge करूँगी। मैं इसको market demand का phenomena जो है, market demand की dynamics जो है, they are a result of market demand. जो पेरेंट्स 600-700 रुपए भी देता है, वो समझता है कि यहाँ पर मुझे बेहतर मयारी तालीम मिल रही है। स्टेट की जो पॉलिसी है, रियासत की जो पॉलिसी है, मेरा तो ख्याल है उसको एक मिनिमलिस्टिक रोल अदा करना चाहिए। उसमें जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है उस पॉलिसी की, उसको शिफ्ट करके पेडागोजिकल फाउंडेशंस बनाए, लर्निंग बेस्ड फाउंडेशंस बनाए, वैल्यूज और ओरिएंटेशन की फाउंडेशन बनाए। और जो इंटाइटलमेंट है हर एक बच्चे की, वो की पॉलिसी में अगर आप लेकर आते हैं, उसमें कहें कि मल्टीपल मोड्स ऑफ डिलीवरी आर एक्सेप्टेबल to give every child his right to schooling and to education. I think many things have come out of this discussion, but clearly the way we are structured right now, ये systems और structures जो हैं, they are so overpowering, इसमें change लाना बहुत मुश्किल है। और ये change societal movements के जरिए आ सकता है। अगर पाकिस्तान में इतना शऊर है, लोग इतने concerned हैं कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में क्या हो रहा है, तो फिर एक मूवमेंट, एक सोसाइटल एक्शन के लिए एक कंसेंसस, एक कॉमन ग्राउंड बन सकता है। मगर ये अभी तक नहीं बना, क्योंकि हम अपने अपने बच्चे की बेहतरी के लिए किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में इसको डाल देते हैं, एंड वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट हैपेंस विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। सो आई स्टिल थिंक दैट दिस कंसर्न इज नॉट एट अ लेवल ऑफ क्राइसिस sufficient enough to bring about change.
And I just want to say that, I was reminded of Mark Twain saying that I never let my schooling interfere with my education. And schooling in Pakistan is actually interfering with the education of our children. It's not buttressing that education, it's often impeding their own natural development of education. Thank you, Shahnaz. Thank you, everybody. Wonderful session. Bada acha, I personally learned a lot. Let me just say 2 or 3 things in closing. One is KG teachers ki to hum baat karte hain, but let me tell you that 2 or 3 of Lahore's famous teachers who educated all of us, including Shahbaz Sharif, Imran Khan, everybody, Nawaz Sharif, etc., died of hunger. Absolute poverty. That's how much we respect we showed them. Many of our teachers, and I can name them, and I'm sure all of you will remember them, are not even invited to our children's weddings, are not invited to any function. So as a society, it's all right for us to talk about teacher ko ye wo vagera, but as a society, we don't respect teachers, and let's put that on the table. The second thing is we have no learning culture. जब हम करते हैं वेबिनार सेमिनार्स वगैरह कोई नहीं आता, लोग अगर डोनर करे सरीना में हो तो लोग चले जाते हैं सिर्फ डोनर को खुश करने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तीसरा प्रॉब्लम है very confused about the role of government and regulation. We use the word regulation very easily and policy very easily, and I've often found when I go to the Staff College of universities to lecture, nobody knows what regulation means, nobody knows what policy means, and we really must get clear on what regulation and policy is, because quite frankly, we have no clue. We wish that the government would do insurance and do everything. That's like wishing to God. Unfortunately, the government is not God, government is us. And if we have not achieved the consensus, or in particular, if we have not built the institutional infrastructure, the institutional infrastructure that delivers, जिसके लिए यूरोप ने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी जंगें की, उन्होंने deliver कर लिया, हमने नहीं किया, unfortunately. So we are paying the price. So I think we need many more thought sessions like this. I'll leave you now. Tomorrow, inshallah, we'll take a public-private partnership. I hope you'll come charged with more thoughts. Let's take this up and let's see how far we can go with our thinking. Thank you very much. I appreciate all your participation. I appreciate your thoughts in your candid discussion. Khuda Hafiz, all the best.